हेलो दोस्तों, विद्यांजलि में आपका स्वागत है। हम नोट्स के द्वारा क्विक रिवीजन करेंगे जेईई के लिए, जो ज़्यादा लाभदायक होगा। चलिए बिना किसी टाइम गवाए रिवीजन शुरू करते हैं। यहाँ पर मोलरिटी दिया हुआ है, तो इसमें अगर हम भी से यानी कि वैल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा। नंबर ऑफ मोल्स को एन से दर्शाते हैं। अगर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो इसमें 22.7 लीटर पर मोल से डिवाइड करेंगे तो यह वॉल्यूम ऑफ गैस एट एसटीपी मिल जाएगा, जो कि लीटर में आता है। और इसमें वॉल्यूम ऑफ गैस दिया है तो इसको 22.7 लीटर पर मोल से मल्टीप्लाई करने पर नंबर ऑफ मोल्स मिल जाता है। और फिर नंबर ऑफ मोल्स दिया है तो इसको मास में चेंज करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और मास को नंबर ऑफ मोल्स में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से डिवाइड कर देते हैं। और फिर नंबर ऑफ पार्टिकल निकालने के लिए नंबर ऑफ मोल्स से इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं एन से, तो नंबर ऑफ पार्टिकल निकल जाता है। और नंबर ऑफ पार्टिकल से नंबर ऑफ मोल्स निकालना है तो इसमें एन से डिवाइड कर देते हैं। एन क्या है? अवोगाद्रो नंबर है। चलिए अब आगे स्टोइकियोमेट्री बेस्ड कॉन्सेप्ट। स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी गिवन है स्मॉल सी कैपिटल सी प्लस स्मॉल डी कैपिटल डी। स्मॉल ए बी सी रिप्रेजेंट इन द रेशियो ऑफ मोल्स वॉल्यूम फॉर गैसियस, यह वॉल्यूम जो गैस के लिए। मॉलिक्यूल इन विच द रिएक्टेंट रिएक्ट ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड। ABC does not represent the ratio of masses. The stoichiometric amount of component may be related as moles of A reacted by A is equal to moles of B reacted by B is equal to moles of C reacted by C is equal to moles of D reacted by D. Amounts may also be related using POAC method. Moles of reactant and product may be related directly using conversion of suitable atoms. आगे है concept of limiting reagent. If data of more than one reactant is given, then first convert all the data into moles. Then divide the moles of reactant with their respective stoichiometric coefficient. The reagent having minimum ratio will be LR. LR means limiting reagent. Then find the moles of product formed or excess reagent left by comparing with the limiting reagent through stoichiometric concept. Percentage yield. In general, when a reaction is carried out in the laboratory, we do not obtain actually the theoretical amount of the product. The amount of the product that is actual obtained is called the actual yield. Knowing the actual yield and theoretical yield, the percentage yield can be calculated as percentage yield is equal to actual yield upon theoretical yield multiply 100. The percentage yield of any product is always equal to the percentage extent of the reaction. फिर आगे है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। इसे अल्फा से प्रदर्शित करते हैं। इट प्रेजेंट्स दैट द मोल्स ऑफ सब्सटेंस डिसोसिएटेड पर मोल ऑफ द सब्सटेंस टेकन ए n particles
then alpha is equal to m naught minus m upon n minus 1 into m, where n is number of product particles per particles of reagent, number of product particles per particles of reagent, reactant m o जो है उसको कहते हैं मोलर मास ऑफ एम, एम को मोलर मास ऑफ फाइनल मिक्सचर बोलते हैं। डिसोसिएशन डिक्रीज द एवरेज मोलर ऑफ द सिस्टम while association increase it. Dissociation decrease the average molar mass of the system while association increase it. Percentage purity, the percentage of the specific compound or element in the impurity sample may be given as percentage purity is equal to actual mass of compound upon total mass of sample into 100. If impurity is unknown, it is always considered as inert, unreactive material. Percentage determination of element in compound. Mass percentage of an element in a compound is equal to atomicity of an element and into atomic mass of an element divided by molecular mass of compound into 100. Method for organic compound. Liebig's method for carbon and hydrogen. Working इसका ऑर्गेनिक कंपाउंड CuE and heat given W1 CO2 plus H2O W2. Percentage of carbon is equal to W1 upon 44 into 12 by W into multiply 100 into 100. Percentage of hydrogen is equal to W2 upon 18 into 2 upon W into 100, where W1 weight of carbon dioxide produced, W2 weight of H2O means water produced, W is equal to weight of organic compound taken. आगे है ड्रूमास मेथड। ऑर्गेनिक कंपाउंड इन प्रेजेंट ऑफ CuO organic compound Cu in present of CuO and heat given N2 and given PVT given P means pressure, V means volume, T means temperature. Use PV is equal to nRT to calculate moles of N2N. Percentage of nitrogen is equal to N into 28 by W into 100. Kjeldahl's method for nitrogen. Organic compound plus H2SO4 given NH4 का होल ट्वाइस SO4 NaOH के प्रेजेंट में फिर गिवन NH3 प्लस H2SO4 गिवन molarity and volume V in L consume given. Present of nitrogen MB into 2 into 14 divided by W into multiply 100, where M is equal to molarity of H2SO4. Some N containing compound do not give the above set of reaction as in Kjeldahl's method. Sulfur
डी सल्फर, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्लस HNO3 गिवन H2SO4 प्लस BaCl2 गिवन W1 BaSO4, percentage of S is equal to W1 upon 233 into 32 by W into 100, where W1 weight of BaSO4, W is equal to weight of organic compound. E है phosphorus, organic compound HNO3 given H3PO4 plus NH3 plus magnesium ammonium molybdenate given MgNH4PO4 गिवन Mg2 हीट करने पर Mg2P2O7, परसेंट ऑफ फास्फोरस W1 upon 222 into 2 into 31 by W into 100. F. Carriers method only for halogens. Organic compound plus HNO3 plus AgNO3 gives AgX. If X is chlorine, then color is white. If X is bromine, then color is dull yellow. If X is iodine, then color is bright yellow. Chlorine cannot be estimated by this. Percentage of X is equal to W1 upon molar weight of AgX into 1 into atomic weight of X divided by W into 100. Empirical and molecular formula. Empirical formula depreciating constituent atom in their simplest ratio. Molecular formula depreciating actual number of atoms in one molecules of the compound. The molecular formula is generally an integral multiple of the empirical formula. For example, molecular formula is equal to empirical formula into N, where N is equal to molecular formula mass upon empirical formula mass. Experimental method to atomic and molecular masses. For determination of atomic mass, Dulong's and Petit's law. Dulong and Petit's law. Atomic weight of metal into specific heat capacity, Kelvin per gram degree Celsius, near about 6.4. It should be remembered that this law is an empirical observation and this given a approximate value of atomic weight. This law gives better result for heavier solid element at high temperature condition. Experimental method for molecular mass determination. A. Victor Meyer's method. Victor Meyer's method is used to determine molecular weight of volatile compound. Silver salt method. Organic acid HNA in presence of AgNO3 gives silver salt WgM.
वेट प्रति ग्राम। ग्रेड Hg x ग्राम। मोलर मास ऑफ एसिड इज इक्वल टू 108 into NW upon x minus n into 108 plus n1 n into 1 is equal to n in bracket 108 W upon x minus 107 ग्राम प्रति मोल। क्लोरोप्लेटिनेट salt method BH2PtCl5 concentration HCl given B2H2PtCl6 whole n ignited platinum x gram। molar mass of base half molar mass of salt minus n into molar mass of H2PtCl6 is equal to half W into 195 into n divided by x minus n into 410 is equal to half W is equal to n by 2 W into 195 by x minus 410 ग्राम पर मोल।